are so inspired. Moving on, ladies and gentlemen, our next speaker is a pioneering force in India's medical device ecosystem, Mr. Rajiv Nath. He is the forum coordinator of the Association of Indian Medical Device Industry and the managing director of Hindustan Syringes and Medical Devices Limited, the makers of Dispo van. Mr. Nath has been instrumental in shaping policy, driving innovation, and championing indigenous manufacturing. Under his visionary leadership, Hindustan Syringes has become a global benchmark in both quality and scale, while AIMED continues to advocate tirelessly for a robust and self-reliant medtech sector. With decades of leadership, he has redefined India's medical device landscapes, from achieving syringe sovereignty to setting global safety benchmarks. Today, Mr. Nath will be speaking on a theme of national importance, Aatmanirbhar Bharat in medical devices, building global competence through safety, innovation, and regulatory reform. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Rajiv Nath with resounding applause. Namaskar everyone. Good to be back again over here at this forum after nearly 7 years. And the last time I was here was at Pharma Leaders Conclave, I think maybe 2017, 2016, when a lot of reforms were taking place. If you can upload the presentation, please. Can you kindly upload the presentation? While they're doing that, let me just brief you. I represent IMED. IMED is the Association of Indian Medical Device Industry. We've got 7 verticals, disposables and consumables. And in COVID times, the word medical device, I think, is now well known to all of us. So, during COVID times, we were searching for thermometers, masks, and you were seeing how nurses and doctors are being troubled for PPE kits and sweating it out because the right quality was not available. But in those 3-4 months that India went under lockdown, and the reason of the lockdown was because we didn't have the medical devices to support the doctors or the patients both. But within March to June of 2020, in 4 months, when everything was under shutdown, in spite of all the challenges, India started manufacturing various kinds of medical devices. And the lockdown was lifted. So where there's a will and where there's teamwork, we could show that yes, we could, by engineering, produce what was required over there, and we could be Aatmanirbhar. That momentum should have continued. It's again faltering, and we need to bring it back on stream. The government, with very meaningful and excellent intent, has been talking about ease of doing business, reducing the cost of doing business, has brought in various policy initiatives from Niti Aayog, from Department of DPITT, DOP, Invest India, with these noble intents of easing manufacturing, reducing bureaucracy and red tapeism, and speeding up manufacturing and removing the shackles for economical reform. So we'll be talking briefly about all these issues today. Briefly about medical devices. You people here from diverse industries, diverse backgrounds as stakeholders. Medical devices are only one part of the ecosystem. But I think you should know that still we are 70% import dependent on medical devices. At the same time, we do have some success stories.
So against $8 billion worth of imports, we do $4 billion worth of exports, nearly half. In disposables and consumables, our exports are more than our imports. So at least in one category, we are no more import fully dependent. People think we are completely dependent upon medical electronics. Yes, we are. But we are also the largest exporter of medical electronics amongst all the various segments. The value of medical electronics is the highest. We find it easier to export and convince doctors and traders outside of India than we can within India. In terms of the growth rate, the growth of medical device exports is more than double digit year on year. So we do hope that in the next 5 to 10 years' time, we will reverse the balance of trades and our exports will be more than imports. Coming back to the basics over here, my own company, I've got more than 9 factories, employing more than 4,500 employees. Until a few years back, I could have put a factory up in 1.5 years' time. I should be very proud कि 9 महीने में 3 माला की बिल्डिंग बना दी कंक्रीट की और सी मार्क भी ले लिया बिफोर CDSO लाइसेंस ले लिया. Again unusual, but yes, getting a C mark for European approval is more difficult. But yes, based on honest, transparent, corruption-free quality system certification, we could get that faster than we could get our CDSO license. On today's date, I'm sorry to state that instead of going forward, we've gone backward. With all that good intent from DPIDT of single window schemes and electronic sugams and everything, we are worse off than before. What was taking us 1.5 years' time now takes us nearly 4 years' time to put a factory in medical devices and wade through more than 50 regulatory approvals, 35 from central government and 15 from state governments. And that adds to the cost of doing business and doesn't allow us to be globally competitive. The e-portals which were there to help us has made life more difficult for us. Why? Because prior to the e-portals, our staff could go to various departments as per need, as per urgency, and then change the files accordingly as per need. Now it is linked as per a system. ये मिलेगा जब आप ये कर लोगे. बिल्डिंग अप्रूवल होएगी तो माइनिंग डिपार्टमेंट आपको देगा. माइनिंग डिपार्टमेंट आपको बेसमेंट के लिए खोदने के लिए अलाउ करेगा तो उसके बाद पोल्यूशन डिपार्टमेंट के पास आप जाएंगे. Because of that linearity involved, and until you get this NOC, until you get that approval, until you get that license, you can't go to the next stage. That's where what was taking 1.5 years now takes 3 to 4 years' time. So systems which were there to help us, we become slave of systems which are now shackling us more. So something has gone amiss which we need to correct. So in terms of the requests, we were invited to Niti Aayog to the GOBA committee, and I made this presentation to the GOBA committee on non-financial reforms. And a few of them have been working upon already. Just last week only certain announcements were made, and even day before yesterday certain announcements have been made. So good to find that the thinking is resonating at the highest level of think tank in the country, and hopefully it will resonate with the state governments and the central government, with the right-minded, meaningful people in the politicians and right-minded, meaningful people in the policymakers. So amongst the various states, I found that Madhya Pradesh had the best business model. They give you a 3-year holiday. आपने नई फैक्ट्री लगानी है तो 3 साल के लिए आपको तंग नहीं करेंगे. It's like school, college. A new entrepreneur will always make mistakes. He has to understand various laws and regulations. His job is to make the product.
and he's being told time and again कि ये rule भी follow करना है, वो rule भी follow करना है, ये भी law कहता है, वो भी law कहता है, and he's expected, he cannot claim ignorance, he's expected to do everything, and then the regulators will come and the inspectors will come and then they'll fine him and penalize him and make life miserable for him. He's going to spend more time in government offices than he's going to spending on the shop floor making the product. That distraction from his core business. But in Madhya Pradesh did a very good thing, that for 3 years they will come, they will point out the mistakes, they will educate, but they will not persecute. And this is the kind of role model we are asking the other states to also follow if they want to state that yes, we want to be industry friendly. What do we mean by industry friendly? That's a time for education to know what you have to be compliant to. Secondly, get that compliance by third-party certification, like is done internationally. When you get third-party certification compliance done, it'll be done in a proper systematic manner, professionally. You might as well spend 5 lakh rupees to follow the system fully rather than paying 5 lakh rupees bribe, not follow it and have a sword hanging on your head for being non-compliant. At IMED, we encourage responsible manufacturing, and that's what we've been telling everybody. Please do follow the law and follow the rule book. The law should be reasonable, implementable, understandable. If they're not going to be understandable, if they're going to be having ambiguity, that creates trouble. Countries moving forward, we are making expressways to drive at 150 kilometers an hour, catching up with the world. We're putting up bullet trains over here now. So we cannot have road signs telling us the speed limit is 60 kilometers an hour when the expressway is designed for 160 kilometers per hour. And everybody is going to be going by that sign and breaking that law. If everybody breaks the law, that means that law is unjust and unreasonable. And time for change has come to remove that impediment over there. The second issue which we found was, our biggest bottleneck was NOCs, no objection certificates. Every bureaucrat, every department has found various ways of not taking a decision and making the entrepreneur go from pillar to post. उस डिपार्टमेंट से NOC लेकर आओ. किताब में कहाँ लिखा हुआ है? Show me a rule book, show me a law book, जहाँ लिखा हुआ है कि NOC चाहिए. It will ask for licensing, it will ask for registration, it will ask for compliance. But कहाँ पर लिखा हुआ है कि NOC चाहिए? No parliament, no legislation has passed that. But every day we are grappling with various kinds of NOCs. Import करो, कस्टम वाले बोलेंगे जी ड्रग कंट्रोलर से NOC लेकर आओ. पोर्ट ऑफिसर के पास जाओगे कि हेड ऑफिस से NOC लेकर आओ. फैक्ट्री अपने बनानी है, फायर का NOC लेकर आओ. डीजल का टैंक आपने लगाना अपनी फैक्ट्री के अंदर, एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट आपको लाइसेंस देगा डीजल का टैंक लगाने के लिए. एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट वाले बोलेंगे कि अपने डीसी से NOC से लेकर आओ. डीसी बोलेगा कि जी आपके नीचे ये 8-10 डिपार्टमेंट हैं, ये 8-10 डिपार्टमेंट से आप NOC लेकर आओ. उसमें एसडीएम का क्या काम है? जिस बंदे ने NOC देना उसको भी ये मालूम नहीं कि मैंने NOC किस बेसिस पे देना है, कि आप ये कंप्लाई करोगे तो मैंने आपको NOC देना है. So what have we gained from this system? Is there any value addition being happening? No. It's only adding to delays and corruption. So we've sought from the government that there should be no NOCs. If anybody requires that compliance, let it come through a legislative process or by an executive order. Central government सोच समझ के एक एग्जेक्टिव ऑर्डर निकाले, सर्कुलर निकाले और कंप्लायंस के लिए बोले कि हमें क्या चीज़ पूरी करनी है. वी शुड नो व्हाट वी हैव टू अचीव इन द चेकलिस्ट, नॉट एन आर्बिट्री NOC जहाँ पर क्या कंप्लाई करना ये भी मालूम नहीं है, किस बेसिस से मिलेगा ये भी मालूम नहीं है. Another area that we find big challenge is interpretation of the law. सेंट्रल गवर्नमेंट वाले ऑफिसर कुछ कह रहे हैं, जोनल ऑफिसर कुछ कह रहे हैं और हर स्टेट पे डिफरेंट है. हम एक कंट्री हैं, एक लॉ है,
तो लॉ की अंडरस्टैंडिंग और परिभाषा और इम्प्लीमेंटेशन बराबर की होनी चाहिए पूरी कंट्री में। अब इंडस्ट्री के लिए एक स्टेट कह रहा है कि आप आ जाइए, मैं आंख बंद कर दूंगा और मैं आपको तंग नहीं करूंगा, आप बद्दी में फैक्ट्री लगा लीजिए हिमाचल में। आर वी सपोज टू मूव आवर फैक्ट्रीज फ्रॉम गुजरात टू हैदराबाद और फ्रॉम दिल्ली टू बद्दी जस्ट बिकॉज द स्टेट गवर्नमेंट विल से कि मैं आंख बंद कर दूंगा और मेरे लिए आज ये अलाउड है और मेरे लिए लॉ और रूल बुक का मीनिंग ये है, और कल को ऑफिसर चेंज हो जाएगा, कोई और रेगुलेटर आ जाएगा तो वो फिर अपनी परिभाषा चेंज कर देगा, फिर आपको तंग करेगा। सो इट कैन नॉट बी द सेम। वी नीड टू हैव हार्मोनाइज्ड रेगुलेशंस इन इक्विटेबल मैनर थ्रू आउट द होल कंट्री इन a same manner. When an entrepreneur or any developer makes any idea or a product, an IP can be about an idea, it can be about a product. There have been a lot of improvements since Mr. Piyush Goyal came into and took charge of the office. Very thankful for him for doing that. But still, if you have to catch up with the world, we need to do a lot more in the IP office for getting patents faster, because it's much faster for an Indian to get an international patent than to get it in India. And we need to use, if we are so strong in software in India, then we have already chosen the digital pathway, so many of the practices of e-governance. Why not over here? So let's use AI and e-governance more proactively to fasten the process. To curb imports, people use tariffs as barriers in developing countries. The developed world uses non-tariff barriers to protect their markets. हमारी भी गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जी जैसे बाकी देश करते हैं नॉन टैरिफ बैरियर लगाते हैं, तो हम भी इसी तरीके से क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के जरिए नॉन टैरिफ बैरियर लगाते हैं। तो हर मिनिस्ट्री को बोला गया जी आप अपना क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लाइए, इससे कंट्री स्ट्रांग होएगी, मैन्युफैक्चरर्स प्रोटेक्ट होंगे, क्वालिटी इंप्रूव होएगी, कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा और मैन्युफैक्चरिंग को बेनिफिट मिलेगा। टॉयज में करा गया एक्सीलेंट रिजल्ट्स, लेकिन जब गवर्नमेंट ने रॉ मटेरियल्स पे पाबंदी लगाई, इंटरमीडिएट्स पे पाबंदी लगाई, कंपोनेंट्स पे पाबंदी लगाई, तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेगा अगर उसको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट इंडिया में नहीं मिल रहा है? ही हैज टू इंपोर्ट। इट्स नॉट ही इज गेटिंग द इंपोर्ट एट अ shoddy quality. He is getting the imports because that kind of raw material or those grades of raw material, the components are not made in the country. So until they are made in the country, he has to import. Before we start impeding imports or regulating imports or having quality control orders, first we should see what's coming into the country, at what specification it's coming, at what volume it's coming, at what price it's coming. And like we did in COVID times, लेट द एंटरप्रेन्योर्स नो कि जी इतनी क्वांटिटी इंपोर्ट हो रही है, इस रेट पे हो रही है, अगर इस रेट पे बनाएंगे तो आपका माल बिक सकता है, ये आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो लोग वो चीज़ बनाएंगे। दैट इंफॉर्मेशन इज नॉर्मली मिसिंग। इन कोविड टाइम्स वी सॉ दैट हैपनिंग, दैट्स व्हाई मैन्युफैक्चरिंग हैपेंड। इफ वी स्टार्ट डूइंग दैट फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स, वी विल हैव मच मोर import substitution taking place with that knowledge information. So first requirement is registration before we bring in regulation. Know what is happening and what is required. Another area is required for the consumers, required for public, required for sustainability, but at times you find it is being misused and abused. These regulations are there with the right intent to protect future generations. But what's actually happening on the ground level is something incorrect. You have an industrial park, industrial zone, पूरे इंडस्ट्रियल जोन की आपने मैपिंग करके सोच समझ के आपने एक इंडस्ट्री खोलने के लिए आपने एक सेक्टर बनाया। आप सेक्टर लगाने के बाद आप फिर इंडस्ट्री को बोलते हो कि जी आप बड़ी फैक्ट्री लगाइए।
इंडस्ट्रियल जोश में आके एक बड़ी फैक्ट्री लगाता है, फिर उसको बोला जाता है कि आपने 2 लाख स्क्वायर फुट की फैक्ट्री लगाई है, इसके लिए तो अपने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं ली है, आप इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए अप्लाई करिए। फैक्ट्री लगाने के बाद अप्लाई करोगे तो वो इलीगल है, पहले लगाना है। सो ऑन वन साइड टॉकिंग टू गो टू ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, ग्लोबल स्केल, and if you already have an industrial park, it's not a factory coming up in a backward area or in a hilltop where environment is going to be disturbed. This has already been cleaned up and developed for industrial use. Why do you have to go through the whole process all over again for environmental clearances over there? I fail to understand. These are the things which add to cost of doing business. Similarly for air and water. अब पानी चाहिए तो पानी चाहिए, इंडस्ट्रियल पार्क है तो पानी फिर की तैयारी करे या डिसाइड कर दे किस टाइप की इंडस्ट्री लगेगी ताकि उसको कम पानी वाली इंडस्ट्री खाली सपोर्ट करनी है, या पानी कैसे उसने रिप्लेनिश करना है, या जीरो वाटर डिस्चार्ज कैसे होएगा। मिस्टर Mayank Gandhi, what steps he's taken are very, very inspiring. So, for everything we cannot depend upon the government. Many things we have to do ourselves. And in business, we need to become Aatmanirbhar more before the country becomes Aatmanirbhar. हर स्टेट पे अलग अलग चैलेंजेस हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अपने लॉज और रूल्स अलग बनाए होते हैं, लेकिन हर स्टेट में हमने देखा कि लॉज एंड रूल्स वेरी करते हैं, चेंज करते हैं। तो जब हमने वेरियस स्टेट्स की हमने स्टडी करी, बड़े ही हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर कुछ स्टेट्स इंडस्ट्री फ्रेंडली थे और कुछ स्टेट्स विदाउट रियलाइजिंग दे वर नॉट बीइंग इंडस्ट्री फ्रेंडली बट दे वर बीइंग स्केरिंग अवे द इंडस्ट्री ओवर देयर। उनकी इंटेंट ये नहीं थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी ब्यूरोक्रेसी ने ये सिस्टम्स डाल दिए थे कि वहाँ पर इंडस्ट्री लगी ना पाए और ग्रो ना कर पाए। अब माइनिंग करनी है, अरावली हिल्स में माइनिंग नहीं होनी चाहिए, हरियाणा में समझ में आता है, दिल्ली एनसीआर के एरिया में, लेकिन अपने फैक्ट्री खोदने के लिए गड्ढा खोदना है, मिट्टी बाहर निकालनी है ताकि उसकी नींव लग सके, फाउंडेशन लगे या बेसमेंट बने, उसके लिए भी आप माइनिंग डिपार्टमेंट के पास जाएंगे। और जितने ट्रक आप निकाल रहे हैं रोज मिट्टी के, वो मिट्टी कहीं पे यूज़ होएगी, उस ट्रक के लिए आप टैक्स पे कर रहे हैं या किसी को आप करप्शन के चार्जेस दे रहे हैं। These are the kind of things which we are to address. And I'm happy to say that I brought this to the knowledge of the Industry Secretary in Haryana and the Industry Minister in Haryana, similarly in other states also. And at the topmost level, they have been able to recognize, yes, this was not actually realized by us that we are creating this as an impediment, and we'll address these issues now. Globally, क्वालिटी स्टार्ट्स फ्रॉम डिज़ाइन फ्रॉम विद इन। हम बात करते हैं इनोवेशन की। व्हेन वी मेक अ मेडिकल डिवाइस, इट शुड डू नो हार्म। द इनोवेशन ऑल्सो व्हेन इट कम्स हैज टू बी इंक्रीमेंटल इनोवेशन एंड शुड ऑल्सो डू नो हार्म। बिफोर दिस इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ मेकर, बाय द रेगुलेटर, it is the responsibility of the engineer and the entrepreneur to address that particular issue. Less plastic use होए, less steel use होए, less waste होए, cost effective होए, value engineered होए, ये सारी चीज़ें एक अच्छे इंजीनियर को सोचनी पड़ती हैं to become globally competitive and cost competitive. My own company, for example, we make Dispo and Syringes. During COVID time, we supplied more than 2 billion syringes internationally. One of every 7 syringes used internationally came from us. We created this safety syringe subsequently, which uses less plastic and prevents sharp injury prevention to the doctors and nurses, reduces the disease burden so that you don't get the infection in the hospital, and number of days you spend in the hospital is reduced. That kind of innovation is something that is going to be helping long term. So one doesn't have to look at price, but one has to look at cost effectiveness. Another area that we've been seeking is medical devices have been made with the eyes of the drug controller.
ड्रग इंस्पेक्टर देखते हैं कि जी एक बीपी इंस्ट्रूमेंट कैसे बनेगा, एक ग्लूकोमीटर कैसे बनेगा। उनको मालूम ही नहीं है फ़र्क क्या है कि एक ईसीजी मशीन क्या होती है और एक डिफिब्रिलेटर क्या होता है। शायद आपको भी नहीं मालूम होएगा। अब जिसको मालूम ही नहीं कि उसने क्या चीज़ रेगुलेट करनी है, वो रेगुलेट कर रहा है। और हम सरकार से काफ़ी टाइम से दरखास्त कर रहे हैं और पार्लियामेंट्री कमेटी भी ये कह रही है सरकार को कि मेडिकल डिवाइस को अलग करिए और प्रॉपर इंजीनियर्स और साइंटिस्ट यूज़ करिए, जैसे बाकी कंट्रीज में होता है, टू रेगुलेट दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जो इसको समझते हैं। नहीं तो ये इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाएगी। नेवी अलग है, एयरफोर्स अलग है, आर्म फोर्सेज अलग हैं। You can't have the naval head reporting to the armed forces head and the armed forces deciding what's good for navy or vice versa. हर की स्किल सेट अलग है, हर की स्पेशलाइजेशन अलग है। फार्मा भी मेडिकल प्रोडक्ट है, मेडिकल डिवाइस भी मेडिकल प्रोडक्ट है, लेकिन हमारे रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। सो इट हैज टू बी डन इन अ डिफरेंट मैनर। जो ड्रग सेंट्रिक सिस्टम हमने बना दिया है वो हमारे को ग्रो नहीं करने दे रहा, और उसमें जो क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी भी नहीं आएगी, ना वो कॉस्ट आएगी। तो फिर से जो मैंने बताया था कि कोविड टाइम में जैसे चीज़ें बननी शुरू हो गई थी, 40 फैक्ट्रियाँ लगी थी थर्मामीटर बनाने की, आज के दिन पे वो कहाँ पर हैं। फिर आप जाएंगे केमिस्ट शॉप पे तो फिर आपको वही इंपोर्टेड थर्मामीटर मिलेगा। 30 फैक्ट्रियाँ लगी थी ऑक्सीमीटर बनाने की, आज के दिन पे कहाँ है, खाली 4-5 रह गई हैं, बाकी सारी बंद हो गई हैं। रेगुलेटर काम है बगीचे में जो वीड्स है वो निकाले, पानी दे, हरी भरी घास होए और जो फूल हैं वो खिले। लेकिन अगर सब कुछ ही बाहर खींच देगा तो बैरन लैंड बन जाएगा, और कुछ भी नहीं करेगा तो जंगल बन जाएगा। ना हमारे को जंगल चाहिए, ना हमारे को बैरन लैंड चाहिए, हमारे को एक अच्छा माली चाहिए। हमारे को बोला जाता है कि जी हम लॉ नहीं दे सकते, तो हमने सरकार से रिक्वेस्ट करी है कि कोई बात नहीं, आपके पास एग्जेक्टिव पावर्स हैं, आप अपने एग्जेक्टिव पावर्स को यूज़ करिए, और जब तक लॉ पास नहीं होता उसके बिना भी आप जैसे फूड सेफ्टी अपने अथॉरिटी बनाई है, वैसे आप मेडिकल डिवाइस सेफ्टी की अथॉरिटी बनाइए, ताकि ये जो 70% हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है ना होए। वी कैन मेक दिस प्रोडक्ट्स इन द कंट्री एंड वी कैन बी प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एक्सेस टू कंज्यूमर्स ऑफ इंडिया। Interim measures are possible if we use our minds innovatively. गवर्नमेंट ने जेम का निर्यात किया पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए, टू रिड्यूस करप्शन, हैव ट्रांसपेरेंसी इन प्रोक्योरमेंट, excellent reform, but people have started innovative ways to how to misuse that form also. As whistleblowers, we keep on telling the government that this is what you need to do, so that the system which you have created with the right intent is not abused and used in an honest manner with integrity the way it should have been. उसमें ऐसी conditions मत लगाइए कि जो local manufacturers हैं वो अपनी market ही ना access कर पाएँ, कि जी अपने गाड़ी चलानी इंडिया में you need an Indian driving license. Why should you need an international driving license? So telling that you have to supply to a hospital in India, in Gujarat or in Maharashtra, Bombay, that you need to have a US FDA approval or to have a CE mark is unfair. What is required is the regulatory approval from India. And if you want a higher voluntary certification, there is a Quality Council of India certification, ICMET certification. There is an ISO 13485. There are international standard private body certifications on a voluntary basis. Seek that. Why do you want to seek a regulatory approval? If I don't want to export to USA, why do you want me to forcefully get a US FDA to sell in my own country in India? These are the kind of impediments which are cleverly put by the importers, and the importers very cleverly try to disallow Indian manufacturers from creating their own market. So these are the kind of restrictions we find in tenders which impede access to our own market over here. As a strategic plan, what we've recommended to the central government is, like I mentioned earlier, third-party certification. जो पुराने मैन्युफैक्चरर्स हैं, पुराने
फैक्ट्रियाँ हैं, उनको मॉडर्नाइज करने दीजिए, 1 साल की एमनेस्टी पीरियड दीजिए। लॉज चेंज हो चुके हैं, बिल्डिंग पुरानी हो चुकी हैं, पुरानी बिल्डिंग्स में आपने फायर के स्प्रिंकलर्स लगाने हैं, स्मोक डिटेक्टर्स लगाने हैं, जनरेटर्स लगाने हैं, तोड़फोड़ करनी है। 1 साल तो चाहिए। अब डॉक्टर को भी नहीं बुलाओगे क्योंकि बीमार हो, और डॉक्टर आएगा और पहले ही आपको पिनलाइज कर देगा, तो फिर आप ठीक कैसे होगे? There has to be an empathetic regulatory reform. Similarly, at the state level, we are seeking these kind of reforms. Out of the 50 regulatory approvals required over there, and the message has to seep across the various policy makers and various politicians that these changes are a must. If we will not achieve these changes, we cannot achieve our goal. जैसे गांधी साहब ने बोला कि बाहर इन्होंने काम करके देखा कि बाहर की कंट्रीज प्रोग्रेस कर रही हैं, हमारा इंडिया क्यों नहीं कर रहा? हमने अपने खुद के स्पीड ब्रेकर लगाए हुए, जब तक ये स्पीड ब्रेकर हम बैरियर्स नहीं तोड़ेंगे तो हम आगे नहीं ग्रो कर सकते। We cannot afford to delay. So it's very important that we act with speed and we bring in these reforms. And what we cannot bring in reforms, we do it internally by responsible manufacturing. Thank you so much. Thank you, Mr. Rajiv Nath. That was indeed a powerful and enlightening talk, shedding light on the future of India's medical device ecosystem and the path towards true Aatmanirbhar Bharat. Ladies and gentlemen, as a mark of respect and gratitude, I now request the visionary leader of this conclave, Dr. Satya Brahma, to kindly come up on the stage once again and do the honor of presenting a memento to Mr. Rajiv Nath. This memento is a symbol of our appreciation for his pioneering contributions to India's med-tech sector and his relentless pursuit of innovation and safety. Let's give a big round of applause for this special moment as Dr. Satya Brahma presents the memento